Hello and welcome to the Equation Effect, where I teach you mathematics and economics in the most vibrant way possible. And आज हम इंटीग्रेशन की एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसे हम इस एग्जांपल से सीखेंगे. और दिस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोथ बोर्ड्स एंड कंपटीशन. सो ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. तो हमारे पास ये फंक्शन है और हमें इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है इसे. तो x अपॉन एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस फोर. पहली जो रिक्वायरमेंट है टू यूज़ पार्शियल फ्रैक्शंस इज़ दैट इट द फंक्शन शुड बी हैविंग factors in the denominator, which is the denominator must be factorized before you apply partial fractions. So यहाँ हम देख सकते हैं कि एक फैक्टर है x प्लस टू और एक फैक्टर है x माइनस फोर और दोनों ही लीनियर फैक्टर्स हैं. तो in this case what we'll do is we assume this function sorry it's in minus 4, right? To be this a upon the first linear factor plus b upon the second linear factor. Note when you know when you actually take the LCM here, the equation the fraction becomes this. And hence these two are equivalent. We could write this as this. We split the fraction into two. Now what we're going to do is this is very interesting actually. We need to find a and b, right? Because a and b are two constants that we have assumed. We don't know the values of a and b, and until we know that हम नहीं लगा सकते कि बता सकते हैं कि क्या इंटीग्रल होगा भी या नहीं. तो पहले हम a और b फाइंड करते हैं. चलो कैसे करेंगे? नोट दिस इज an identity, right? This number 1 is an identity. So both sides are equal for any values of a and b, right? And x for any values of x. Both sides are equal, not any value of a and b. Sorry, that was a mistake. X for any value of x, both sides of the equation is true. So one is an identity. We'll use that property. So what we do first is we write this as it is, no changes whatsoever, and we write this by taking the LCM first, right? And ऊपर हम जैसे फ्रैक्शंस फिगर आउट करते हैं वैसे करेंगे. तो a टाइम्स x माइनस फोर इंटू b टाइम्स x प्लस टू. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बेसिक फ्रैक्शंस टू यू, right? Don't expect me to do that in this video. So this is the thing. So note carefully, both sides, the denominators cancel out as they're the same, right? So we're left with, I'm writing this the reversed way, we're left with a times, sorry, a times x minus 4 plus b times x plus 2 equal to x. Name this number 2. Now हमें इस दूसरे इक्वेशन को यूज करना है टू फाइंड a and b, right? And the way we do it, मैंने पहले कहा था कि ये एक आइडेंटिटी है. So for any value of x, इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई होगी. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कन्वीनियंटली चूज द वैल्यूज ऑफ x एंड पुट इट इन इक्वेशन 2 टू फाइंड a and b. कैसे दिखाता हूँ. मुझे पहले a निकालना है, राइट? तो अगर इसमें से मुझे a निकालना है, ये चाहिए होगा ना, तो मुझे किसी तरह इस टर्म को ज़ीरो करना पड़ेगा. अगर मैं इस टर्म को ज़ीरो कर देता हूँ तो देयर विल बी ए लीनियर रिलेशन एंड आई कुड सॉल्व फॉर x, राइट? सो b वाले टर्म को अगर ज़ीरो करते हैं तो विल बी लेफ्ट विथ ओनली a एंड वी कैन फिगर दैट So the way we do it is we could put any value in places of x.
तो we conveniently choose x equal to -2. Why? Very carefully. Put x equal to -2. So when you put x equal to -2 in this equation 2, what you will get is a times 2 minus 4. We're putting -2 in places of x, right? Plus b times, this is the fun, -2 plus 2, and right hand side by -2 for x. This is 0. -2 plus 2 is just 0. So this whole term is just 0. So we're just left with -2 minus 4 is -6, -6a equal to -2. Minus cancelled out. So a equal to 2 upon 6, which is 1 upon 3. तो ऐसा हमने x तो निकाल लिया, I mean a तो निकाल लिया, right? Similarly हमें conveniently एक ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी so that we could also find the value of b. उसके लिए हम क्या करेंगे? Again हम x को 4 पुट करेंगे, राइट? x को 4 पुट करेंगे तो द इक्वेशन बिकम्स a इंटू एक्स, सॉरी 4 minus 4, 4 minus 4 plus b times 4 plus 2 equal to, well, 4, right? Again ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, that is 0 because 4 minus 4 is 0 and 0 times a is 0. So again a is eliminated from the equation. We can now write 4 plus 2 is 6, so 6b equal to, oh sorry, equal to 4. So b is ultimately 2 upon 3. This is how we find a and b by using partial fractions. Now the integrand has become this. You could follow. The integrand has become integral a upon x minus 4 dx plus integral of b, which is 2 upon 3, by x. So I think this is plus 2, right? This x plus 2, x minus 4 dx. So what we did here is we just plugged in the value of a and b in this portion. So the original fraction has now become this, and a and b, we found a and b by using the property that this equation will be an identity. So we got a to be 1/3 and b to be 2/3. तो यहाँ a and b के बदले में हमने 1/3 और 2/3 पुट किया, तो it's 1/3 upon x plus 2 dx plus 2/3 upon x minus 4 dx. अब देखो, अब इतना मुश्किल नहीं रहा है. अब एलिमेंट्री बेसिक इंटीग्रेशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हो. 2 dx plus 2 upon 3 इंटीग्रल ऑफ dx. तो हम सबको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 upon x dx is what? log of absolute value of x plus c. और अगर लीनियर फैक्टर भी रहे तो x plus a अगर रहे तो it's just log of absolute value of that linear factor plus the constant, right? So that's what we're going to be doing here. So it's simply, very simply, 1/3 times the log of absolute value of the denominator, which is x plus 2, plus 2/3 times log of the denominator, which is x minus 4. And this is your answer. और हमने already integrate कर भी दिया इसे. So this is how we use partial fractions to evaluate integrals of algebraic function or rational functions. तो in this respect मुझे discuss करना चाहिए कि
रैशनल फंक्शंस क्या होती है? तो एनी फंक्शन which is, say there is an fx which is equal to some p of x divided by some q of x, the ratio as a ratio between two functions, these are called as rational functions. And we use partial fractions to integrate rational functions because पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करने से ये जो भयंकर टर्म है उसे हम सिंपल सम्स के आकार में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ईजिली इंटीग्रेबल है. तो आज के लिए इतना ही. मैं ट्राई करूँगा कि फ्रीक्वेंटली अपलोड करूँ. And let me know in the comments if you want some specific type of videos or specific topic. I'll try to. And also let me know, as this is my first video, I want you guys to tell me whether you want long videos, the duration long, whether you want it to be long or short. So that's it for today. Study well, keep studying. Ta-da.